हाँ भाई, क्या चल रहा है भाई? रुक जाओगे थोड़ा? वो सेटअप वो करना है थोड़ा। आज ना एक इंटरेस्टिंग चीज है, तुमको आज मजा आएगी। आज अपने फोटो वोटो भी खींचेंगे, ठीक है ना? मैं गाने चला देता हूँ, फिर अपने फोटो खींचते हैं। Where is the Spotify? Give me Spotify. Give me, give me, give me Spotify. Where is it? Where is it? हिप हॉप बजाएंगे, हिप हॉप। लोफाई बजाते हैं। लोफाई सुनोगे कि सिंथवेव सुनोगे? हैं? लोफाई सुनोगे सिंथवेव सुनोगे? सिंथवेव बजाते हैं यार, लोफाई छोड़ोगे? सुनो तुम, और मैं आया। थोड़ा कम कर देता हूँ। लाइट है, सही है। चलो मैं अभी फोटो खींच लेता पहले। जला दे, फोटो खींच रहे अपने। जुगाड़ देख लो भाई का, जुगाड़ देखो। फोकस सेट करना, फोकस कैसे? फोकस सही है। हो गया फोकस। सॉल्ट है। ऐसी चाहिए भाई तुमने, इसको पिराने कैसा आया दिखाओ। हाथ थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा, हाथ थोड़ा और ऊपर लेना पड़ेगा। वो सेट हो गया। रह जा भाई, क्या
तो आइडिया होगा तो क्या है। आज वेबकैम सही लग रहा है क्या? आई डोंट नो। आहा, वाह बेटे बेटे। अरे नहीं, पर थोड़ा हाथ आगे रखना पड़ेगा बे, ये बहुत क्लोज हो गया है। थोड़ा रुक जाओ बे, रुक जाओ। अच्छा, मीम वाला बना है क्या? एक तुमने मीम देखा है क्या? उसको साइड में रखो। तुमको एक मीम दिखा तुम उसके जैसा बना सकते हैं। तुमको एक मीम दिखाता हूँ, उसके जैसा बना सकते हैं। रुक जाओ, दिखाता हूँ। मेरे को इतना ही याद है। हाँ देखो, ये रिक्रिएट करना है क्या अभी? हैं, ये रिक्रिएट करते हैं ऐसा कर गए। क्या है इसका, किधर गया? ओ मस्त बनेगा, रुक जाओ, मेरे को मस्त आइडिया आया मीम के लिए। ये बनाते शॉर्ट, ये बनाते मजा आएगा। देखो तुम ये बनाते हैं। ये लाइट बंद कर दूं क्या? बाद में करता, अभी तो चाहिएगी, बाद में करता। फोकस आई गेस हिला नहीं, आई होप हिला नहीं है तो अच्छी बात है। कर नहीं सकते। देख कैसा है। आई गेस मेरे को लगा कि जब मैं उठा के रखा ना कैमरा, मेरे को लगा फोकस थोड़ा हिल गया। फोकस वाली रिंग मेरे से हिल गई, सन को लगा। हाँ बे, पूरी हिल गई। ठीक है, चेक करके अपने को ऐसे थोड़ा वो तो है अंदाजा कैसे सेट करने का फोकस। ये सही लग रहा। लास्ट अटेम्प्ट है, हो ही जाएगा 100 का। ये लास्ट वाला भी हो ही गया था, सिर्फ उसमें फोकस नहीं हुआ। हो गया, मस्ती नहीं हो गया। क्या तुम लोग को दिखता है क्या? गजब बोल। अरे वाह, क्या बनाए हो, क्या एक्टिंग किए हो। पर आई गेस उसका ना नहीं कुछ लोचा है, कुछ लोचा है, कुछ लोचा है। कैमरा एंगल ये कैमरा एंगल ही गलत है। यूं है ही नहीं, यूं है, यूं ये एंगल पे यूं तो है। छोटी सी है मिस्टेक, लेकिन अपने परफेक्ट नहीं। मैं वापस करेंगे। तीन लोग आ गए थे, क्या कर रहे हो? अरे फटाफट करते, तीन लोग आ गए थे।
जो जो नया है उनको कंटेक्स्ट के लिए बता दूं, अपने को अभी थंबनेल बनाने की है, उसका फोटो खींच रहे। कंटेक्स्ट बताया उतने में एक बंदा चला गया। यूं है ये से है, ये जोरदार है। अच्छा अबे कवाली गाना वैसा वन भाई यार, भाई कवाली गा रहा हूँ गलत। एक लास्ट ट्रैक इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो का भी करो। ये तो है ही परफेक्ट है, मुझे तो यही करने का शॉर्ट है तो बहुत शॉर्ट वाली बनेगा। कुछ तो गलत लग रहा है। हाँ भाई थोड़ा ऊपर आना होगा। लास्ट ट्राई है, जैसा आया चलेगा। जैसा भी आया चलेगा। ये तो आ ही जाना चाहिए। हेल्प क्या करूं? क्या फोटो लिए है हलाल बाबा, क्या फोटो लिए। ओ भाई मजा करा दी, मौज कर दी बेटे बेटे। तो इसका हो गया काम तमाम। इसको करो ऑफ, इसको करो छपरा बंद। Is that piece of shit? हेडफोन माइक पहन ले गांडे, स्ट्रीम जाली हो ये पहनता। इधर क्या मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, कीबोर्ड निकालना पड़ेगा लाइक। तुम लोग क्या सुन रहे ले अभी तक, देखें तो सही। वो कॉपी हो रहा है अभी, फिर एडिट करते हैं अपने। कॉपी हो जाए तो मैं ये कीबोर्ड डालूंगा।
आज अच्छे एंगल पे है ना कैमरा। कैमरा बोल रहा हूँ, वेब कैम। थोड़ा यूं नीचे कर दूं, कैसा रहेगा नीचे कर दूं? ये पहले तो इसको हटाओ, इसका काम हुआ खत्म। तुम आओ थोड़ा आगे, हाँ, और तुम भी आओ थोड़ा आराम से आगे, थोड़ा और, कुछ निकल ना जाए बस पीछे। हाँ, सॉर्ट माशाल्लाह, क्या लग रहे यार। तब तक खुद देखते बकचोदी करते जब तक वो कॉपी हो रहा है। अरे भाईजान क्या कर रहे, रखो इधर। आज में कैमरा यहाँ पे रखना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ से क्रॉप मारो। ए चंदू जैसा पूरा ही क्रॉप हो रहा है। शिफ्ट, अबे ऑल्ट दबा के तो होता था, ऑल्ट बट FPS वो सही है। हो गया कॉपी, ऑटो कर ले मैंने भाई। ट्वेल्व भाई थोड़ा यूं करना है, 1280 नहीं रखते, क्या रखते हैं? ये रेजोल्यूशन है, वह रेजोल्यूशन नहीं बे, रेजो तो ठीक है। आई वॉन्ट टू यूं करना है, छोटा छोटा नहीं हो रहा है तो बीटी है बे। मैं ऑल्ट दबा के कर रहा हूँ तो वही हो रहा है, पूरा ही हो रहा है। कोई वांधा नहीं, ऐसे ही चला लेंगे, खाली सेंटर में आ जाए, थोड़ा छोटा हो जाए। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, वो पहले वाला तो हो जाता था। कंट्रोल दबा के है क्या? नहीं मैं कंट्रोल से भी नहीं हो रहा है। लाइट है, ये ऐसे ही चला लेते। मैं पीछे की लाइट बंद करके आया भाई साहब, वस्त्र पहले उतारने पड़ेंगे। अब सही है, मेरे फेस पे काफी लाइट है। आई डोंट थिंक मेरे को वो पीछे वाली लाइट की जरूरत है कि नहीं, और वो भी सही दिखता है ऐसे। मैं इसको अगर थोड़ा यूं ले लूँ, कभी यूं ले लूँ और फिर यूं कर दूँ तो बेटर रहेगा। हाँ ना, यू टेल मी, मच बेटर। कैसे नीचे से बोलना सॉरी, मैं क्विट है ये ना तुम्हारा है। मेरे को वैसे हेडफोन पहन के रखने की जरूरत तो है नहीं, बट आई स्टिल डू इट। हाँ, अब ये भाई साहब हो गए कॉपी। क्या करना है? फॉर्मेट स्टार्ट, ओके, format complete, nice, thank you. Close. Take this thing out of my system. And give me my keyboard back. Yeah. Sort है फिर, खाली सिस्टम थोड़ा वीक है अभी, उसका तो कुछ कर नहीं, शॉर्ट है बाकी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं, बहुत बकचोदी होगी। लो-फाई बजाते हैं, इसमें मजा नहीं आ रही।
12 घंटे की प्लेलिस्ट है वे। एक दिन करे क्या 12 घंटे की स्ट्रीम? ये सैटरडे करते हैं, देखते हैं अगर कुछ नहीं होगा ये सैटरडे तो ये सैटरडे अपने 12 घंटे की स्ट्रीम करते हैं। इसकी माँ का कोई बीटी ही नहीं है। क्या बनाना है अपने को? थंबनेल। थोड़ा यूं बैठना पड़ेगा, एक कीबोर्ड इधर है थोड़ा, इसको भी इधर कर लेता थोड़ा। भाई का फेस तो दिखना चाहिए भाई। स्ट्रीम फोटोशॉप थंबनेल क्या? मेरे को पर आइडिया क्या आया था मैं वो भूल गया। लाइट है वे। आज तो तुमको कोई बीटी ही नहीं है, स्ट्रीम एकदम परफेक्ट चलेगी क्योंकि आज उस पे कर रहे हैं ना अपन 30 FPS स्ट्रीम में है। फोटोशॉप में तुम 60 FPS देख के क्या कर लोगे? है कि नहीं भाई? कौन सा चाहिए था अपने को? लास्ट वाला ना। कहाँ गया स्ट्रीम? फोटो मटेरियल। एक्टर तो दुआ भाई पैदाइश ही है भाई। Control J. As I always say, अरे kids never do anything to the background layer. सिंपल ट्राई मारते एक बार। वाह भाई फोटोशॉप भाई तुम मजे करा दिए। शॉर्ट है भाई। तो इससे क्या हो गया? इसको कितना ही लिया? ले पूरा। हाँ भाई लिए हो ना? हाँ तो ठीक है। ये ना अपने लैसो टूल दे देते हैं, मेरे को बेटर लगता है लैसो टूल। जब इतना अपने क्लोज चले जाते हैं लैसो टूल इज प्रीसाइज इनफ। पहले थोड़ा ऊपर से कर लेते हैं, फिर एजेस पे जाएंगे। अबे निकालना है भाई। प्लस दबा के रखे। ऊपर से क्या जाने का, चले जाओ। अबे चल कोई नहीं। जाता हूँ मैं, सॉरी। शॉर्ट और कहाँ है बांधे? बाल तो नहीं लिए उसने, चलेगा। इधर है बांधे। लासो टूल बहुत वो है वे, काफी तुमको अगर प्रीसाइज बनाना हो ना तो लास्ट में लासो टूल ही काम आता है। अंडररेटेड है वे लासो टूल, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है। माउस वर्थ इट है वे, माउस अच्छा लिया करो तुम। कीबोर्ड भले वो वापरो, लैपटॉप अगर है तो लैपटॉप का कीबोर्ड भले वापरो, लेकिन माउस में खर्चा जरूर करना तो बोल देता हूँ। डोंट
skimp out on the mouse. Okay, mouse is a game changer. A good mouse is a game changer. ओए किधर गया बे? ओए भाई डर गया। सच्ची डर गया वाला, किधर गया ये? ऐसे लूं क्या नील का? ना बे, अच्छा नहीं है। ले लेते। शॉर्ट है। कहाँ गया था मैं? नहीं बस शॉर्ट ही है। मधु तेरा नहीं बन रहा है, आके इधर नाइस नाइस करके जा रहा है। तेरा बना दूं मेरे को वांदा नहीं, लेकिन मैं ना ये जो आज बनाऊंगा ना उसका वीडियो डालूंगा, ठीक है, इन चैनल पे। एंड आई एम श्योर कि देखो उससे तो वांदा होगा ही, लिख के दे सकता ना तो। ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, लोभ नहीं करेंगे, ज्यादा लालच नहीं करेंगे, जितना आता है उतना ले लेने का। Sort. साला पूरा ही तो मैं कर रहा, किया गया सिलेक्ट करके ना। यहाँ पे जरूर हाँ मिस्टेक की रहेगी, पता ही नहीं। वैसे आई कैन लुक पास्ट दिस, आई डोंट रियली माइंड द मिस्टेक, लेकिन अरे देखी गई है, ऑन स्ट्रीम दिख गई है तो ले लेते हैं। थोड़ा ज्यादा आउटलाइन के ले लेंगे, बाद में फेदर कर देंगे, लाइट है। ये लाइट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली ये वाले ले लो, बाल में ज़्यादा नहीं है।
रफली यहाँ पे है ना, सही सही। वाह भाई, इट इज प्रीटी एडिक्वेट, आई विल नॉट लाई। हो गया, बाकी तो अपन ने लिएगा। कहीं अंदर नहीं छूट रहा ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। हो गया, डालो मास्क, कंट्रोल सी मारो, सॉरी कंट्रोल, हाँ सी मारो, आओ। क्या, अच्छा वो विंडोज दबा रहा हूँ, सॉरी विंडोज दबा रहा था मैं। ऐसा रखना है कि यूं रखना पड़ेगा ना? यूं रखना पड़ेगा। सॉर्ट बैकग्राउंड क्या है? चैट में कोई आए तो करी। प्लीज कीप द चैट क्लीन वाला। बैकग्राउंड क्या डालें? क्या कलर डालें? ग्रेडियंट डालते हैं, अच्छा ग्रेडियंट देखते हैं। ये बहुत अच्छी साइट है ग्रेडियंट्स, यहाँ पे मस्त तुमको ग्रेडियंट वेडियंट मिल जाते हैं। साला मेरे को तो हर बार ये दिखाता है। कितना 3-4 पेज स्किप मारूं। नेक्स्ट, क्लोज, नेक्स्ट। चीप कॉकटेल भी देख खेला है, कौन सा अच्छा रहेगा? तुमको कौन सा मजा आ रही देखने में? ये सही है, प्रोएक्टिव शावर। येलो के साथ कौन सा जाएगा? मेरी पेल येलो, colors that go with pale yellow, green, light purple, black। येलो के साथ क्या क्या जाता है बे? हाँ ये जोरदार है बे, ये जोरदार है। टील, इन शॉर्ट टील जाता है ना, टील जाता है, चलो टील जाता है, टील और लैवेंडर जाता है। टील, लैवेंडर और पिंक जाएगा। तो अपने देखते हैं पिंक में पहले। ये पिंक है ना? आई गेस ये पिंक है। नहीं बे, पिंक थोड़ी है। तो दिखा पिंक, पिंक ग्रेडियंट दिखा, तू दिखा ग्रीन ग्रेडियंट दिखा, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू विथ, हाँ ये दिखा ग्रीन ब्लू। तू तो भाई गॉड। पेस्टल, पेस्टल तो मेरी वो है शर्ट। टील ग्रेडियंट था। चलो अभी देखते हैं कौन सा शॉर्ट लग रहा। पहले टील में देखते, टील में अच्छा है डाल देंगे। ये है नहीं, ये पहले, हाँ वैसे वो अच्छा था, डाल दूं? डाल के देखते हैं, रुक जाओ। और क्या था? कैसे खींचे? यहां से यहां खींचे ना, यहां से यहां। दिखा दे भाई। रिवर्स हो गया, सॉरी रिवर्स नहीं करना है। तो दिखा यहाँ से यहाँ।
नहीं मजा नहीं आ रहा है अभी। ग्रे का अबे चलना, इतना तो पता चलता है साढ़े। टील देख, मेरे को टील पता चलता है, टील बहुत वापरेला है मैंने, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, इसलिए मेरे को टील पता चलता है। भाई इसमें मजा नहीं है, दूसरा देखते हैं भाई, फटाफट करते हैं, अभी वो भी बनाना है। क्या ग्रीन देखेंगे क्या? पिंक देखते हैं क्या? ये तो सैल्मन पिंक, ऐसा नहीं चाहिए। ऑर्डर सेंसेस, हाँ ये मस्त लग रहा है। ये देखते हुए डार्क नहीं रखनी है, थोड़ी लाइवली वो रखनी है, थोड़ी ब्राइट रखनी है। ये देखें लेनेंस प्लेलिस्ट देखते। यहाँ से यहाँ लाना है ना। That was weird. हाँ क्या कर रहे थे? यहाँ से यहाँ मजा नहीं आ रहा बे, मजा नहीं आ रहा। आई डोंट नो, मेरे को तो लैकिंग लग रहा है। ऐसा तो सही लग रहा है, कोई लाइट है। रुक जा, अभी तो बहुत सारी लेयर डलेंगी पे। ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, ये फिर भी ठीक लग रहा है। ये रखते हैं फिलहाल के लिए। अभी इसका थोड़ा मास्किंग में फेदर देते। ज्यादा नहीं देना है। That's it. थोड़ा ताकि ब्लेंड इन हो, समझे। वही बैकग्राउंड रखें क्या? एक सेकंड, लुक्स गुड नॉट गोना लाई। अबे वो बैकग्राउंड रखें क्या, मीम वाला, जिस मीम को अपने रीएक्ट कर रहे हैं। तो बंद करो वे, साला क्रोम ही है वो, ब्रेव ही खाता है आधा तो। इसका इसका ही बैकग्राउंड रखते हैं, लाइट इसका ही बैकग्राउंड रखते हैं। हाँ वे तो यही होगा ना, यार। हाँ वे इसका ही रखते हैं। यही रखते हैं। क्या आपने देख रहे, फिलहाल के लिए हाइड करते हैं। शायद मैं ऊपर से टिंट दे दूं ये ग्रेडियंट की, बट फिलहाल तो लाइट रखते हैं। क्वालिटी इस वाले की अच्छी नहीं है, बट वी कैन वर्क विद दैट। ये okay, sorry, my bad. Always duplicate, lock that, hide that, and do whatever you want to on this. Give me the last one now. ओए आराम से, मैं इतना जल्दी में क्यों हूँ? गरम खून है सब जवानी का। Select subject. हाँ, is this a Supra? Yo. नहीं बे, फोटोशॉप वाली स्ट्रीम का रखना है।
अबे क्या कर रहा, लेयर वी आर कॉपी क्लोज दैट, नाउ सिलेक्ट द सब्जेक्ट। इसको इधर भी नहीं हो रहा है बे सिलेक्ट सब्जेक्ट, क्या गांडा है बे। रुक जा, इससे इजी तो वो है, मैं खुद ही कर लूं। अबे लॉक नहीं बनना मेरे भाई, कर 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 कर। हाँ इधर इसको थोड़ा लोचा पड़ेगा, वो अपने लाशों से कर लेते हैं अभी। की शॉर्ट है, हाँ बस अभी बाकी लाशों से ही करना पड़ेगा भाई। बेसिकली करना ये है, इसको यहाँ पे वो करना है, क्या बोलते हैं, कुछ करना है। तुमको बता दूँ क्या करना है। अपने को ना ग्रीडी नहीं बनना है पहली बात तो, मेरे जैसा, ठीक है। मैं है ग्रीडी, मैं बड़े बड़े लेगा रिस्क इधर, अरे पूरा कहीं पे अटकता, तुमको नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि क्यों बताओ, फॉर एग्जाम्पल बताओ तुमको क्यों नहीं लेना है, क्योंकि मैं तो प्रो है भाई, तुम थोड़ी प्रो हो। यूं ही जा रहा है ना बाल, वो ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसका कंटेंट अवेयर मारना है, कंटेंट अवेयर फिल। अभी थोड़ी चिपके, शायद स्ट्रीम में पहले बोल रहा था, तेरा नहीं बना सकता ब्रो, ये अभी जो मैं बनाऊंगा ना कस्टम, अभी आज की स्ट्रीम में जो भी मैं बनाऊंगा ना, वो एक वीडियो में यूज करूंगा मैं, यूट्यूब वीडियो में। तो अगर तेरे को वांदा नहीं है मैं तेरा यूट्यूब वीडियो में यूज करूँ तो बना सकता, अगर वांदा है तो सॉरी ना ब्रो। क्या बना इसमें दिखाओ, थोड़ी चिपकेगी, बाकी अपने रब कर देंगे, लाइट है। आई कैन वर्क विद दिस, maybe, just maybe, yeah, I think I can। पर अपन से ना एक मिस्टेक हो गई, मैं तुमको बताता क्या मिस्टेक हुई है ब्रो, तुझे वांदा नहीं पर मैं बताता एक चीज, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई अपने को ना, लेयर भी या कट मारने का। एक्चुअली लेयर भी क्यों अपने वो कर रहे हैं, जस्ट डी सिलेक्ट, हाँ अपने वही कर रहे हैं ना, कंटेंट अवेयर ही मारना है ना, ऊपर ऊपर से ले लो ना भाई, क्या है गलत बीटी ले रहे हैं अभी में, ऊपर से ले लेने का, कंटेंट अवेयर में ज्यादा वो करने का नहीं। ले ले पूरा, अब थोड़ी चिपकेगी, मैं वांदा नहीं, ठीक है चल, तेरा बना डालता, लाइट है। वो कनी को बांधा है इसलिए मैं आज कनी का नहीं बना, नहीं तो पहले कनी का बनता है ये टाइम पे। फिर मैं सोचा अभी आयुष का बनाऊंगा, तो अभी तू बोल रहा है तो तेरा बना देता हूँ, लाइट है। तेरे में को मेल अभी देखना भी बाकी है। क्या है, कंटेंट अवेयर, वेयर इज इट, ऑटो कर, एक बार देखूंगा। Bruh, that looks, oh that looks okay, that looks real nice, apply, yeah, हो जाएगा, I can totally work with that bro, I can totally work with that, बनाना copyright strike दे दूंगा, ठीक है भाई, नहीं बनाऊंगा भाई, नहीं बनाऊंगा भाई। T to merge them, but wait, Control J and Control E, original तो रखने, Control C, Control V।
अभी मेरे को वो साइड डालने का है। मैं वो साइड जाऊं कि बटरफ्लाई को वो साइड डालूं? मैं वो साइड चला जाता, ओरिजिनलिटी रखते, मेरे को वांदा ही नहीं। यहाँ पे था ना वो लौंडा, वे ये बीटी है क्या? मेरे को यहाँ पे रखना पड़ेगा, कोई वांदा नहीं। ये भाई एक तो ये विंडोज खुल जाता बार बार। बटरफ्लाई को यहाँ पे कैसे लाऊं मैं? रुक जा भाई, एक तो ये, अच्छा अभी वो नहीं है, पूरा नहीं है। ओके किधर गया? इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं, अपने को यहाँ पे आ जाएगा। शॉर्ट शॉर्ट, कोई कुछ बोलेगा नहीं, शॉर्ट है, शॉर्ट है। अच्छा मेरे को भी मेरा वो थोड़ा पेस्टल करना पड़ेगा ना। अभी खींचा है देख ये फोटो, वो पहले जाके देख स्ट्रीम में, अभी खींचा है। अभी मेरे को थोड़ा ब्लेंड इन करने के लिए इसको राइट में लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर था वो बंदा, इसके लिए फिर बड़ा करना पड़ेगा यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे ले सकता, तो फिर बटरफ्लाई हैरान करती। तो क्या करते हैं, अपने पास आइडिया है, ठीक है, अपने पास आइडिया की कमी नहीं है, बोले तो गेट आइडिया। तो उसके साथ ये भी तो आ रहा। लाइट है ना, तुमको वांदा है क्या? इतना वांदा है क्या तुमको? इतनी मेहनत कराओगे मेरे से? रुक जा बे, मेहनत कराओगे क्या? Almost. सुमा भाई फोटोशॉप हैक कर रहा गलत पे। चल कोई नहीं, बाकी मैं ब्लर दे देगा, ज्यादा है नहीं वाला। शॉर्ट है भाई, पता है भाई, शॉर्ट है भाई एकदम भाई। ये ऊपर नीचे क्यों है? आई डोंट नो भाई, ये ऊपर नीचे क्यों है? काम करता ना, पूरे को इरेज ही मार देता। मासी का देख तू, इरेज क्यों नहीं हो रहा बे? ब्रश हो जा भाई, ब्रश कर दे। अच्छा ये उस पे नहीं है, इस पे, इस पे भी नहीं है क्या? पता है किस पे? यही तो है, ब्रश नहीं करने दे रहा भाई, कोई आना नहीं। हाँ अब करने दे रहा है, थोड़ा चलता है, थोड़ा इधर उधर चलता है, चला लेने का। इधर खिड़की थी ही नहीं, ऐसा समझ लो। गलत बीटी लेने की नहीं, इधर खिड़की थी ही नहीं। अभी तुमको एक जादू दिखाता मैं, ठीक है, जादू। एक मिस्टेक हो गई, नई लेयर पे करने का था।
पूरा यहाँ से ये पूरा कर दो, फिर तुमको एक मैजिक दिखाता। हाँ, अब मारेंगे अपन मास्क। अब करेंगे अपन कलाकारी चालू। कर दो सॉफ्ट, कर दो ब्रश को, जिधर जिधर नहीं चाहिए उधर उधर, ओ सॉरी, जिधर जिधर नहीं चाहिए उधर उधर निकालता जाने का। बाबा यूं करके देखो, इधर चाहिए अपने को, इधर से नहीं निकाले, अरे इधर से नहीं निकालेंगे बोला, निकाल दो, 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 निकाल दो। तुम सोच रहे हो कि मेरे को दिख कैसे रहे, ऐसे बस, इससे ज़्यादा मेहनत मैं नहीं कर रहा, जहाँ थोड़ी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं भाई, थोड़ी कर देते यहाँ पे जहाँ जहाँ थोड़ा डिफॉर्म लग रहा है वहाँ कर देते भाई। इधर तो मेरा वो आ गया, बाकी शॉर्ट है, ठीक है कि नहीं भाई? अब दिखाओ। आ हा हा, आ हा हा हा, अरे भाई 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 भाई, शॉर्ट है। वेलकम टू द स्ट्रीम दिव्यांशु। क्या कर रहे थे? मैं मीम क्या सोचा था वही भूल गया मैं। अबे इसमें लिखने का क्या सोचा था मैं वही भूल गया। पहले ना मेरे को खुद को फिल्टर करो, अति सुंदर, आई नो रे, ये मारो, सिलेक्ट नहीं, कन्वर्ट, शिफ्ट कंट्रोल ए, कैमरा रॉ फिल्टर का। अब ना थोड़ा मेरे को देखने दोगे? हाँ, टेम्परेचर बढ़ाना तो, टेम्परेचर तो सही है मेरा, थोड़ी टिंट अगर अपने डाल सकें, थोड़ी मैं डालना चाहूँगा मजेंटा की। एक्सपोजर में आना नहीं, कंट्रास्ट थोड़ा कम कर देते हैं इमेज के हिसाब से, पेल चाहिए थोड़ी, थोड़ा क्या पूरा ही उड़ा दिया हाईलाइट भी कम करो, पेल चाहिए, इतनी नहीं, 55, शैडोज वाले बड़ी वाइट्स, तो टेक्सचर दे दे थोड़ा, नहीं टेक्सचर नहीं चाहिए, थोड़ी चिपकेगी स्ट्रीम, ये थोड़ा हैवी है कैमरा रॉ फिल्टर, थोड़ी स्ट्रीम चिपकेगी, थोड़ी थोड़ी लैग आएगा, हल्का हल्का। टीहेज नहीं करना है, थोड़ा और पेल मारो, वाइब्रेंस थोड़ा बढ़ा दे, ज़्यादा कम हो गया है। अब लग रहा है ना, अब लग रहा है ना, थोड़ा लग रहा है कि मीम में बिलोंग करता है। अब अपने क्या करते हैं, देखो पता, ओ मोदी जी स्वागत है आपका स्ट्रीम में। अबे महर्षि, अपने वेक्टर आर्ट आज जो बनाऊंगा मैं, उसका मैं वीडियो ही बनाऊंगा पूरा, वो हलाल टॉक स्टेक पे, सीखो पैंट। अच्छा, मैं नॉइज इतनी है नहीं ये पिक्चर में, ठीक है, तो 1.5 थोड़ी अपने को फिर भी डालनी है। आई एम फैंसी और क्या डाल सकते हैं, डस्ट स्क्रैच डाल सकते हैं, ये ना पूरे पे ही डालते हैं। क्या
ऐसे थोड़ी मिलेगा डस्ट स्क्रैच। आई गेस डस्ट स्क्रैच डालने के लिए मेरे को, अरे जी એટલે वो वाला जी, डस्ट स्क्रैच डालने के लिए फिल्टर कन्वर्ट फिल्टर, तो दिख क्यों नहीं रहा बे? दिख ही नहीं रहा। स्पेकल, इसको स्क्रीन करो, अब डाल। नहीं दिख रहा, काम का नहीं है। मैं सोचा अगर वाइट आते ना, डस्ट और स्क्रैचेस अगर वाइट कलर के आते ना, तो मैं वो ब्लैक लेयर पे डाल के ब्लैक लेयर को स्क्रीन मार दूँ, એટલે ब्लैक गायब, वाइट डस्ट स्क्रैच हो जाएंगे। वांदा नहीं, अपने पास तो सब रेडी पड़ा होता है मटेरियल। फोटोशॉप नहीं दे रहा है तो क्या हो गया, अभी निकालता हूँ। गिव मी मैं ना थोड़ा फैंसी है तो मैं स्मोक भी डालेगा, स्क्रीन मारेगा, कैपेसिटी डाल 35%। मैं है फैंसी में, क्या करें। किधर गया डस्ट स्क्रैच वाला, मिल जाओ भाई, ये रहा। हाँ देखो, अब मारो स्क्रीन आर फेवरेट और इसको करो 15%। ज़्यादा डस्ट को स्क्रैच भी नहीं चाहिए, आई गेस मेरे फेस पे नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी नॉइज डाल रखी है मैंने। डन। अभी लिखना क्या था वो तो याद दिलाओ मेरे को। लिखना क्या था वही भूल गया मैं नींद में। याद आया याद आया। थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा। मेरे को क्या डालना है बताऊं तुमको, रैंडम आइडिया, मतलब ऐसा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ मेरे को डालना क्या है, मीम क्या बनाना है एक्चुअली। मैं तुमको बताता हूँ करना क्या है। किधर गया, अब समझो। अच्छा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सॉरी, माफ करो माफ करो। ये मेरे को यहाँ पे रखना है, फिर मेरे को लिखना है अब समझे तुमको, अब तुम समझे मेरे को क्या लिखना है। मेरे को ये बनाना है। अब समझे। थोड़ा ऑफेंसिव हो जाएगा कि नहीं। फक इट बे, कौन देखता है वैसे भी स्ट्रीम। ओ तेरी,
अच्छे व्यूअर्स आ गए भाई साहब, इसकी मासी का। सब्सक्राइब करना जो भी नया है, लाइक तो कर ही दोगे तुम, इतना तो मेरे को भरोसा है, इतना तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मेरे को पता है, तुम लाइक तो कर ही दोगे, है कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? तो अब सही है ना? शॉर्ट है, शॉर्ट है, चलो इसको थोड़ा फैंसी बनाते हैं। हलाल है भाई, फैंसी तो होगा। यू है ना बटरफ्लाई। यूं है, अभी मेरे को वो चेंज नहीं करने दे रहा है चेंज करने दे रहा। यूं है, यूं था, अब यूं है। अब देख, अच्छा नहीं लग रहा बे ना, सही है, ऐसे ही सही है। शैडो दे देते हैं। स्प्रेड नहीं, सॉरी, साइज। $25 कर दे। आर्ट के वीडियो के लिए, हाँ, वेक्टर आर्ट के वीडियो के लिए थंबनेल डालना है। ये हो रहा है, बन गया बस, अभी माय रिलेटिव्स वाले को, और कहीं पे हलाल इज लाइव चिपकाना है। और एक और मेरे को आइडिया आया, एक और थोड़ा फैंसी चीज मारते मुंह पे। हाँ तो चपलोट साहब आए भाई, आउट ऑफ नोवेयर। सबके पीछे है ना, धुएं के भी पीछे है ना। बॉर्डर हटा दूं? कौन सी बॉर्डर? जो वेक्टर आर्ट पे लगाई वो? नहीं, फिर थोड़ा रफ लग रहा है, रुक जाओ। कलर 100, ये हटा दो, इसकी जगह एक लेयर डालो।
रखूं के जान दूं? ये रखूं के जान दूं? बताओ बे, ये फोटोशॉप वाला रखूं क्या जान दूं? शॉर्ट लग रहा, आई थिंक अच्छा लग रहा रहेगा तो यहाँ पे हटा दूं जान दूं? जल्दी बताओ। नीचे रखूं किसी के? ये सबके नीचे रखता शॉर्ट। कलर बर्न कर सकते हैं इस पे, कलर डॉट सॉरी नहीं कर सकते। सॉफ्ट लाइट नहीं, हार्ड लाइट नहीं। ओ मल्टीप्लाई रखते हैं। शॉर्ट है वे, थोड़ा नीचे है। सही लग रहा, नीचे ला दे, ला दे वे। कैपेसिटी थोड़ी सही है, कैपेसिटी भी सही है। अबे आजा बे, क्या हो रहा है? चड्डा जी, अबे भाई अभी तो 6 थे कॉन्करेंट व्यूअर्स, एक पे आ गए। लाहौल लाहौल भाई 6 थे अभी 5 मिनट पहले कॉन्करेंट व्यूअर्स, एक पे आ गए भाई। आज काफी लोग आए स्ट्रीम पे। सेंटर पे है ये चड्डा, कैमरा सेंटर पे चलो।
शॉर्ट लग रहा है चड्डा, शॉर्ट लग रहा है जो तू देख रहा है, शॉर्ट लग रहा है ना। अभी ये मैं थंबनेल रखूंगा, अभी जो स्ट्रीम देख रहे हो उसकी ये थंबनेल जाएगी। हलाल इज लाइव कहीं चिपकाने गए, कहाँ चिपकाऊं? शॉर्ट है हलाल इज लाइव, ये लिखा ही है। What else do I need? अबे white particles साला white ओवरले हो गया, white particles चाहिए भाई। हाँ रेडी है भाई, सेव में। कहाँ चाहिए अपने को? हाँ बस इसके एग्जैक्ट नीचे शॉर्ट है, स्क्रीन मारो। इधर नहीं चाहिए लेकिन लाइक शॉर्ट है लेकिन यहाँ पे चाहिए सिर्फ मेरी साइड, मेरे को ज्यादा वो नहीं चाहिए। Is this a smart object? What the heck? Nah, bro, nah. Rasterize that. Rasterize that shit. ब्लेंडिंग मोड चेंज करना। कलर डॉज मारेंगे। बाकी सब तो घटिया है, स्क्रीन ही सही है। कलर डॉज कर सकते, स्क्रीन सही है। सही लग रहा है नहीं लग रहा?
Why is this not working? हाँ, thank you. कौन सी दी वो लेयर? ये वाली ना? जरा नीचे लेके आते, थोड़ी चाहिए अपनी, ज़्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा आगे बैठूंगा। स्पेसिंग सही नहीं थी, मैं तो सोच क्या ही गलत लग रहा है, सही था पहले। शॉर्ट है, हो गया, चलो बहुत है। सही है। ये डालने देता है क्या? ओ हो गया, अभी अपडेट मार देते हैं। Don't need that. Nope. Nope. अपडेट मारते। मैं फोटोशॉप बंद क्यों किया? अभी काम है। सॉर्ट एकदम। पानी भर गया है। अब तक क्या करना है? मेल देख लेते हैं। आए इसको पूछ लेते हैं कौन से वाले के बारे में।
अच्छा, अब अपना थोड़ा ट्विस्ट है, ठीक है। ये हार्ड पड़ेगा कि ये हार्ड पड़ेगा? हार्ड तो दोनों ही पड़ेंगे, डाउनलोड तो करना ही है तो। हो गए। डन। cancel on no. ये दो हैं अपने पास, दोनों का बन सकता है। किसका बनाने का है तुम डिसाइड करो, तब तक मैं थोड़ा पानी वानी भर के और जो सेटअप चाहिए वो करूँ। इसमें मैं क्यों करूँगा, मेरे को टैग दिया है, मैं तो नहीं, मेरे को टैग किया है।
वैलोरेंट नहीं भाई, आज नहीं, आज ये बनाने की है वेक्टर। नो वैलोरेंट टुडे, सॉरी। लाजा भाई, सॉरी, नो वैलोरेंट टुडे। अब तुमको एक मस्त प्रोफेशनल चीज दिखाता हूँ, देखो। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ये बाद में वीडियो भी बनाना है, ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रीम में से तो उठा नहीं सकता ऑडियो, तो वीडियो तो यहाँ से ही आएगा स्ट्रीम से, लेकिन मैं ऑडियो नहीं उठा सकता क्योंकि पीछे गाने चल रहे हैं, वो बीच में कट मारूंगा तो फिर वो, तो अपने क्या करेंगे, फोन में अलग से मैं ऑडियो रिकॉर्ड करूंगा, वो डाल देंगे सिंक करके। मैं वैसे भी सिंक तो उसमें टी-लॉग में भी करता ही, क्योंकि टी-लॉग में जो ऑडियो सुनते हो वो फोन में रिकॉर्ड होती है, माइक में, वो मेरे कैमरा में ये माइक इनपुट नहीं है। आ जाने वाला था ना, नहीं भाई कल आएगा, आज तो शूट किया मैं। दो माइक पहन के क्या तुम्हारा भाई। ये इसके कहाँ डालूं, अरे कहाँ डालूं यहाँ पे डालता चल, अरे नहीं यहाँ पे नहीं डालूं, हाँ ये सही है। ये वाला बोला भाई साहब ने बनाने का, भाई ये बहुत अजीब आदमी है वे। भाई इसका बनाना ही नहीं है मेरे को, बहुत टाइम पास कर रहा है। स्काईलाइन इसमें दिख रही नहीं, दिख रही तुमको, बोलता है इसमें दिख रही है, ये स्काईलाइन है, ये ऑरेंज है इधर, ये अभी इसको फिर एयरप्लेन मोड में डाल देता, वरना भी कोई फोन करके हैरान कर देगा। खाली फिक्स हो जाए कौन से उसका करना है। ये किया बंद, ये किया एयरप्लेन मोड चल, चलो अब ये थोड़ा लंबा दो, हाँ ये सही है, शॉर्ट, चलो तो उसमें जाएगा पॉकेट में। मैं ट्राई, अबे मैं इंग्लिश में बोलूं कि हिंदी में ही रखूं ये वीडियो, हैं क्या बोलते हो? इंग्लिश में ऑडियंस ज़्यादा आएगी, मतलब ग्लोबल ऑडियंस आएगी, लाइक रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा कि भाई हाँ इंडिया में ही देख सकता हिंदी कंटेंट। बताओ बे, हिंदी रखूं इंग्लिश रखूं? दोनों रखता हूँ, ये वाला है। नहीं भाई नहीं आ सकता, सॉरी। हाँ ठीक है भाई लोग, तो आज अपने बनाने वाले हैं वेक्टर आर्ट। अब वेक्टर आर्ट सिंपल है, ठीक है, कुछ नहीं है। सबसे पहले तुम फोटो लो जिसका तुमको बनाना है वेक्टर आर्ट, और उसको फोटोशॉप में उसकी ओरिजिनल क्वालिटी में खोलो, ठीक है, कोई रीसाइज मत करना, कुछ मत करना, जो है तुम्हारा फोटो वो ओरिजिनल क्वालिटी में खोलो, ठीक है। मेक श्योर यू लॉक the initial layer, hit Ctrl J to duplicate and hide the original layer. This is a rule of thumb, never do anything, never apply anything to the original layer, keep the original layer intact. That might be helpful to you further on if you make a mistake, okay? So we're going to do everything based on the copied layer, and to start off इट्स सिंपल, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है। जस्ट क्रिएट अ न्यू लेयर एंड कीप इट ओवर योर copied original layer and make sure the new layer is selected. Okay, now if you do this, so I would suggest that
you should name your layers according to the body part that you are drawing. Okay, so I'll be drawing this guy's face first, so I'll name this layer as face. Now what you essentially have to do the whole time is get the pen tool, hit P to select the pen tool and just draw around his face. Okay, so we'll start here on a sharp point like this one, and just using the pen tool make the required curve and just draw. Make sure, now while you're doing this, make sure the new layer that you created is selected and not the original, not the copy of the original image that we need. Okay, it's very important to draw every part of a vector in a new layer. Okay, we're just tracing the image on a new layer. Pretty cool, right? Okay. Now I'm sure you already know how to use the pen tool. If you don't, I suggest you first learn how to use the pen tool, because the pen tool is your best friend while making a vector art. Well, one of your best friends. Now, one tip that I would suggest is just avoid the imperfections. Okay, try and make it as perfect as you can be. If you see a minor imperfection in the face, imperfection in the body, just omit that. Okay, we're not here hating on anybody. The guy in the image is live, is with us in the chat and he's cheering for his own vector art. Okay, cool. Now, when you're drawing the face, make sure to, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया बे, इंग्लिश में करना हार्ड है बे, क्या बोल रहा था, शिट भूल गया, क्या बोल रहा था. So for the face, I would suggest this orientation. Okay, face layer is the bottommost layer. Oh, sorry, the layer where you draw or trace the neck is the bottommost layer. Then comes the layer of the face and the ears, and then comes the hair. Okay, so you have to make the hair precise and गया इतना ही है. You have to make the hair precise. आदि खाली फेस बनाना है कि तेरे को वो भी चाहिए, पूरा चाहिए तेरे को, किसी फेस बनवाना है, बता दे भाई. देख भाई, डबल चिन कट मार रहा मैं, ठीक है. आदि भाई बता दे.
So when you reach the other edge of the ear, we have essentially made, or I should say, we have essentially traced the part that we need to be precise, okay? Where we need to be precise when it comes to the face. Now we can just do this and trace along the hair. Now you might ask why, and if you recall, I said the orientation of the vector is going to be the neck, the face and the hair. So the layer that contains the trace of the hair is gonna be on top of the face anyways. So it doesn't matter if your face is precise from here on out, you just have to be precise over here from the chin. Got it? Now once you have traced and completed the selection, you just hit selection, hit OK, and there you have it. There you have the face. Now what you need to do is hit B on your keyboard, that brings up the brush. Hit press and hold Alt, and with your right click drag the mouse up to soften the brush and drag it down to harden it. I'm gonna leave it at the hardest one and just increase the size by dragging your mouse to the right and decrease it by going to the left. I'm gonna take a brush here. I'm gonna hit hold Alt and left click on the color that you want face to be. I'm gonna pick this color right here. I'm gonna come here and increase the brightness from 87 to 91. Yeah, that seems about right. Voila, you've just made the face. Trust the process. It doesn't look that appealing right now, but it will. Okay, now just hide the face layer, hit Ctrl D to deselect, and now above the face layer make a new layer and name it hair. And as the name suggests, we're gonna trace the hair. Why is it not? Just a second. Yeah, that's the problem. Make sure the layer hair is selected. Click P on your keyboard to open a pen tool. And just start tracing the hair. Okay. From here, I'm starting from here.
Now once you have traced the hair, just make a selection and don't worry about the extra bits of hair that you might have and that you should have left while making the selection, because I have a trick to include them as well, and I'll come to it later in the video. Now for the hair, I'm going to take this black. It's actually not black, is it? This color right here. Let's see, how does that look? The face. See? It looks nice already. Add a new layer and name that neck, and place that under the face layer. Now what you have to do, you have to be precise around the edges of the neck, because the layer that contains the shirt is going to be on top of the layer that has the neck. Okay, so you have to be precise with the shirt, not really with the neck. हेयर फेड आएगा भाई, वो सब लास्ट में होता है. शांति जाड़ हुआ मेरा नहीं करवाना मुझे. अच्छा, hit P, start tracing. Happy tracing. Now what you're gonna do, select. Now for the neck, I would suggest a trick right here. So it goes like कुछ भी बोल रहा हूँ भाई. Now to color the neck, I would suggest to just pick the color of your face. Come here, decrease the brightness by about 4%. So I'm just gonna go 87 and color that. Oh, sorry, my bad. Color the neck, okay, not the face. My bad. Okay, cool. Now let's see.
Now, what you want to do is you want to add shadow to the neck, right? Because it doesn't really separate that much from the hair. So what you can do right here is Control D to deselect, make a new layer and name it neck shadow. Now what you can do is get your pen tool and draw one here, and go like that. Okay, that'll add a nice shadow. Go like that, and there. Hit selection, hit OK, and now color this with a very black. Just select black and turn the brightness up to 15%. Now color this layer with this. Now what you want to do, hit Ctrl D to deselect. By hold the arrow key and hover your mouse above this neck, between the neck and neck shadow layer, and you'll see this symbol. That's basically we're clipping the neck shadow layer to the neck layer, so it will remain within the parameters of the neck layer. Okay, we want the shadow only on the neck. Now what you want to do is select the neck shadow layer and drop the opacity down to about 10%. See, there you have it. There you have the neck shadow. Now you can alter this, but I would suggest to stick with whatever you have. Close all of those. ये देखो इधर उतार दूंगी, मेरे को थोड़ी सॉन्ग सुनना है, तुमको ही सुनना है, उतार देता। हैरान कर दे वैसे भी, सॉन्ग सुन के मैं क्या करूंगा भाई, हैं? शांति चाहिए, साला सॉन्ग बज रहा है, मेरे से इंग्लिश में बोला नहीं जा रहा। रखूं भी किधर कन्यर को, लाइट है, चलो किधर थे? Now what you want to do is above the next shadow layer, create a new layer and name that as the shirt, right? Because in this case we have a shirt. Select the hit key on your keyboard to select the pen tool. Get real close, and remember we have to make the shirt sharp, okay? Because it's above the neck layer. So just come here. Do we wanna? Yeah, we wanna. I want to get some.
बहुत टाइम से कुछ बोला नहीं मैं। फेक स्माइल, तूने इसका वो दूसरा वाला तो देखा नहीं अभी, देखो दूसरा दिखा रहा हूँ। Okay, so we're done with the tracing of the shirt. Now, this, as always, hit selection, hit OK. Take the brush, select the color of the shirt. There, just color. Is that the color of the shirt? Oh, that's the color of the shirt. Now you might be wondering, Halal, where is the design of the shirt? Now, the reality is that the design that this shirt possesses is kind of hard for me to replicate, so I'm just gonna skip the design on this thing. Doesn't mean I'm not gonna add shadows. The shadows are gonna come very soon in the video, but yeah, I'm omitting the design of this shirt. If the shirt
of the person that you're making a vector of has a simpler design, I'd say go for it. You already know how to use the pen tool. Might as well draw the design of the shirt. Okay, yeah, shirt or t-shirt or whatever they're wearing. Now, if it is something complex like this, I wouldn't really suggest you to go for it. However, you could do one thing which I might try later on in the stream. It might or might not end up in the video, who knows. Let's see. But for now, we're done with the shirt, neck, hair and face, and this is how it looks so far. I think it looks convincing. Now we'll finish these little bits off of the arm, and then we'll come to adding shadows. Okay, and that's pretty much it for this vector. Now this is an easier one to draw, and I took this up just because I wanted to save some time while making the video and to show you pretty much everything that you need to know to make a vector. If you have queries on how to, if the subject has a beard or a glass, or is wearing sunglasses, or there are some pants in the picture, there are some hands, there are some accessories, how to get around those, let me know in the comments below, and I might make a follow-up video of this one explaining how to do them. But for now, just come here on the shirt, while holding Control, click on the new layer button, and that will create a new layer below the layer that you have selected, and we'll name this the arm. Actually, we'll name it the left arm. Get the pen tool and draw. You don't really have to resize. If your subject has tiny arms, mine does, and tiny in the sense that they're not showing that much. There. With selection, take the brush and make it the color of the neck. Alright, so there's the neck. Let's color that, right? And with the shirt, you already know what it is. Now deselect that, switch that off, get a new layer, name it right arm. Right of mine, not his right. That's why I'm not writing his right. It's my right. With the right to mine. Now for this, I don't really need to, select. I don't really need to trace the arm because it's just a very small area and it's being cut off by the corners. Okay. For this right arm, I'm just gonna make the brush bigger. Hit a dot. Voila, you have the arm. But yeah, I get the problem. It looks as if, nah, it should look alright. I mean, that's how it looks. Yeah, I might just omit that altogether or not. Let me just see for a bit. Can do just the eraser, that part, keep it like that. Yeah, that looks better. That looks much better. Again, just make changes according to your image and it should turn out to be fine. I don't know, I actually am perplexed on this thing. How do I come up on this? Because for now it seems that there is, his arm is right there, but
Doesn't matter, we'll add the shadows. So we'll just now you might notice something. See right here how it doesn't fit in, like there's a space between the arm and the chest and there's no space. Well, the thing is that we haven't added shadows yet. So if you look closely right here, all of this is the arm, but it looks like an arm because it has shadows over here. When we add shadows, it'll look exactly the same. And talking about the shadows, let's add shadows because we're done with everything else. Now you might notice some minor imperfections like these. There's a bit of space left here. Now what you can do to solve this is just click on the neck layer, sample this color and just, okay, it's the neck shadow, just fill it in, okay? Sample this, fill it in, no, okay, might be the shirt. The shirt, the right arms, shadow. That means एक नहीं है, रोनी के दो हैं, रोनी का दूसरा भी बनाया है मैंने. Now you might notice some imperfections like these. There's space between the neck shadow layer and the shirts layer. Now to solve this, I can't really draw on the neck shadow layer because it's clipped to the neck layer. So it's gonna be within the neck layer. And I can't really draw on neck layer because it's gonna look bad, because we have, if you remember, we have dropped the opacity of the neck shadow layer to 10%. So if we need this to blend in, we'll have to drop the opacity to 10%. But if we do that, the whole of neck layer drops down to 10%, which we don't want. So what we can do is create a new layer and keep it below the neck layer. Now just sample this color, or what you can do is just come here, and if you remember, that color is nothing but black, and then its brightness turned up to 15%. Now do that, select the new layer and name it correction. Fill this in. Sorry, we might have to. Correction, and then sample this color first. Control D to deselect. Make sure the layer correction is selected. Fill that in with that. Now what you can do is hit a new layer, correction, shadow. Now what you can do is, if you remember, this neck shadow is nothing
but color black and its brightness turned up to 15%. Make sure correction shadow is selected, and then drop its opacity down to 10%, and voila, fix the correction. Sorry, you made the correction. That's it. That's basically your base vector done. Now all we have to do is add shadows to make it more realistic. So to start off, we'll add shadows in his hair. That's the easy part. So select hair and drop everything else down. Alright, so you see just the hair. Now make sure hair layer is selected and drop its opacity down to 50%, so you can see some of the original hair. Now what you want to do is you want to give him a fade right here, because if you see, his hair fades, right? So what we can do is either we can select the color of his face and fade into that, or we can use the eraser tool and just rub it off completely, which we will not do, and I'll show you why. So if we use the eraser tool and drop the flow to about 10% and make it soft, notice if I come up here and do this, see, you can see the layer behind, and that's not what we want. We want the hair to fade in with the skin, and that's why we will not use the eraser, but we will use the brush, and we'll sample the color of the skin. Now undo that, do all of that, don't want it. There. Now what we'll do is just come up here, make sure that our hardness is at 0%, the flow is at about 5%, make sure the layer hair is selected, and now what you want to do is create a new layer above the layer hair and name it hair fade. Halahal is not replying to his friends because Halahal is making a YouTube video. See, Halahal has two mics on, you can see. You guys can hear the music in the stream right now, but you'll not hear the music in the video later on. Okay? वो रिप्लाई नहीं करता, वहां बराबर है, तो क्या मैं क्या कर रहा था, भूला दिया अभी क्या कर रहा था. Hair fade, select hair fade, and right about here the hair starts to fade, right? So you want to come gradually down from here, right? So about from midway we'll add another strokes. From about this we'll add some more. Just fade in. Now let's see how this looks. It might not look appealing right now. It does, kinda not. You can just play around with the fade, right?
I think that looks okay. I don't know for sure, but I think it looks fine. Yeah, what if we drop the opacity down? Make sure to drop the opacity down. 50. Right, that looks nice. You can just duplicate, right? Chat's going wild. Brothers Day की गिफ्ट समझ ले भाई. हाँ भाई. अरे ऊपर से अरे वो खराब ही लगेगा. फेड अच्छी तरह से देने का कोई रास्ता है ही नहीं. बोल रहा. You can do one thing. I can try one thing. No, wait. Let me try one thing. Just delete this layer. Give me another layer. Let me try fade. I'll do a gradient. This color. This color. Let me try this. Might work, might not. Let's see. It did nothing. It did nothing. Okay, sorry. Bro, that's a nice fade. Nice fade. That's a nice fade. Bro, look at that fade. Okay, I'll be okay. And I just have to do it on all together. That's genius. That is absolutely genius. Let's go. Bro, that fade looks nice. That fade looks dope. बोल तो दूं वीडियो के लिए क्या किया मैंने. वापस करते हैं. भाई क्या दिमाग चलाया बे. Good job. So to give a light fade in his hair, what we'll do is we'll use a workaround. Okay, so what you want to do is create a new layer above the hair layer and name it fade. Now what you want to do is clip this fade layer to the hair layer and select the hair layer and lock the transparent pixels. This button right here that locks all the pixels that have not been colored or that are transparent. Okay, so now make sure the layer fade is selected. Come here to the gradient and sample the colors. The color on the left should be the color of your hair. The color on the right should be the color of the skin. Hit OK. Make sure it's not reversed. Make sure the dither is off. Now what you want to do is just come here where you want the fade to start at about here. Holding shift, come down till a bit below the edge, the end of the hairline, and release. There you go. Voila, you have a perfect fade. Now you can alter the fade by just increasing or decreasing the length of the gradient. Okay, and this doesn't look really nice because as you can see it does not have a full fade right here. So we're just gonna stick with the first one. Okay, that's a neat little trick that Halal boy taught you today. There we go. Now we're gonna get the easier parts out of our way before we move on to the shirt. Okay, so
the easier part would be the neck, and the arms. So the arms are easier than the neck. So we'll just start there. Hide everything, and left arm. We'll add a bit of shadow right there. Make sure the left arm is on and the opacity is at 35%, because we want to see what's going on behind that layer. Now create a new layer above the left arm and name it left arm shadows. Now for an instance like this, where you can totally omit using shadows on the left arm because it won't really matter, you can omit, okay, but I just like to flex a bit, okay, I am fancy that way. So what you want to do is, remember, the arm layer is below the shirt layer, okay, so we don't really have to be sharp, we just have to be, fancy enough. So just use, okay, ye batana bhul gaya. So just hit L on your keyboard, that brings up the lasso tool. Okay, so this is like a freehand pen tool, continuous pen tool or something. And don't worry if the mask goes outside the arm, because we're gonna clip this layer to the left arm layer. Now take the brush tool, make it hard. That sounded wrong, okay, don't add me. Now to add the shadows, there are different types of shadows. Like for instance, I don't think there's much shadow, like a dark shadow here, so we're just gonna bump the brightness of the black color, okay, so just select the black and bump the brightness up to 20%. Okay, just gonna what happened? Are we painting? Oh, okay, flow, sorry. Forgot about the flow. I want 10, I want 100%. Okay, just color that. See, it's just only coloring on the left arm. Now bring the left arm to 100% and drop the opacity of the left arm shadow to about 15%, maybe a bit more. Just play with this, okay, it's up to you how much shadow you want. I'm gonna stick with 25. Control D to deselect. There you have your shadow. Right? Didn't really matter. Will not matter most. Actually, you know what? I'll drop it down to 15%. Doesn't really make a difference, but I just want to, because I'm fancy, I told you. Now here comes the actual impactful part. Okay, we need to add a shadow to the right arm to make it seem more realistic. Just drop the opacity down to 25. Create a new layer. Name it shadows, and hit L on your keyboard to bring up the lasso tool. Now what you want to do is come from here all the way to there. Okay, that's the selection. Now what you want to do is create a gradient. Okay, we're gonna create a gradient, so we're just gonna fill this first. Now what you want to do is make sure the right arm shadows is clipped to the right arm layer. Okay, it's 25%, sorry, make sure it's clipped to that. Now what you want to do is lock the transparent pixels. Now take the gradient, take it from black to the color of the arm. That's basically that. Okay, so and now just come here and do that. Actually, you don't need to do that. Location 50. Okay.
Now what you want to do is make sure the right arm shadows is selected. Now from bottom, from this, actually we need here for that. Okay, so just do this. Bit more. Here. It's gonna create a nice even shadow. Now I do want to have a bit more shadows, so I'm just going to drag it out a bit more. There you go. Bring the opacity to 100. Take this down to around 15, maybe 5. Let's see how it looks. Alright. There you go. I'm actually gonna 35. 45, let's go. 45 is fantastic. Okay, 45 it is. Control D to deselect. Voila, you have the arms out of your way. Now let's see how the vector looks. So the only thing left to do now is basically the shirt, which is the hardest part. Not the hardest. Nothing is hard in creating a vector image, but it's just lengthy. It takes a lot of time. As you can see, it's been already an hour, and I consider this one a simple vector to draw because it has nothing complex other than the design of the shirt, which we're omitting anyways. So yeah. So for now, just hide everything. Sorry about that. Hide everything. Keep the shirt layer on, hide the fade. Now bring the opacity of the shirt layer to 50%, maybe, yeah, 50%. Bring the opacity down, maybe pick it up to 75, doesn't matter. Now you want to create the collars, okay? So we basically have to create a shadow here. So it makes it look like there's a collar there, okay? So nothing complex to it, okay? So what we're gonna do is create a new layer and name it collar shadow. To bring the opacity down. Now make sure the collar shadow layer is selected and bring the lasso tool, and from here just create a freehand mask. Alright, just create a little way. Okay. Now try and be precise here. It's not really mandatory, but I would suggest to be precise here. Okay, just omit that part. You can hold shift and draw to add to the selection, and hold alt and draw to remove from the selection, okay, with the lasso tool. Now that you have this layer, remember it's gonna go above the shirt layer, so we're gonna have to omit this right here, okay? We don't need that. It's gonna look horrible if we keep it that. Okay, we don't need this part right here. We don't need this part right here. Okay, that's basically where the shadows are for now, and the other shadows are right here. So holding shift, come up here and just go. And don't hesitate to, just come here. Just come here. What is that? What is that? Okay, just make it a bit more pointy. So those are basically
what are those? Those are basically colors, right? So now that's done. Now what we'll do is we'll take the brush, we'll color it for now. Now lock the transparent pixels, and what you want to do is get the gradient, get the color of the shirt here. That's the color of the shirt. Sample the color of the shirt. Bring the opacity down to 50 again. And make sure the color shadow is selected. Now just come up here in the gradient. Now from black you want to go to the color of the shirt. That's that. Okay, it's done. Now what you want to do is aim for the top of the collar, whichever the top is. Just aim down, straight down from there to about here, which already looks fine. Now what you can do is just clip this to the shirt. Voila! Bring the opacity to 100. Make this 20. Actually not 20, but 35, 55. Totally. Now I know that does not look like a collar. I know it doesn't. It doesn't right now. It will. Trust me, it will. In a matter of seconds. But actually, you know what? I am oh yeah, here. And then a bit more. Here. Yeah, so we made an alteration, and we just took the gradient and ended up right about there. It looks a bit more natural that way, okay? Like it makes an illusion like there is some depth there. There is, but we're not done yet, okay? So now make a new layer above the color shadow and name it color shadow surroundings. Right? Now what you need to do is select that and drop the opacity to 50. Make sure the color shadow surrounding is selected. Now what you want to do is get your lasso tool, just draw around this color's edge right here, right? Just trace it back like that. So what we essentially have here is another little shadow, and we'll add this too to the mix, because why not, right? Now what you want to do is take the brush, color it for now, whatever color that is selected. Now lock the transparent pixels, hit G on your keyboard to break the gradient tool. Now you want to go from here to here, right? Like this to about there. That's actually not that good. There you go. Just go from there to there. So you have this like beautiful fade right here. Now what you do is just clip this one there as well. Drop the opacity down to 35 maybe.
Now when you bring the opacity to 100%, deselect that. Like that, you just made a collar. It looks more like a collar now, right? Yes, it does. I know it does. So you have those shadows right there, you know what I mean? Yeah. Now what you can, now you'll have to do that, the same thing over here as well. So make another collar. Collar, shadow, surroundings. 2 maybe. Yeah. Hide, don't hide those. Just drop the opacity to 50%. Make sure the second color shadow surrounding there is selected, and hit L on your keyboard to bring up the lasso tool. Now what you want to do is trace right here till about there, till up there. Take that and complete that. Also, you could do right. Oh, sorry. Control Z. Make sure you have shift. Make sure you're holding shift. Okay. And Control Z. Just draw along. A color. About there. Now just take the brush, color them. Lock the transparent pixels, G, and go from there to about there. About there. Yeah, that looks nice. Like that. Yeah. Hit Control D to deselect. Clip that. And bring the opacity down to 45%. Now we will bring the opacity down back to 100%. There you go. You just made the colors. Nice. Good job. Now what we have to do, what we have left to do is the general shadows, and by general shadows I mean all of these, you know, these shadows, these right here, these, all of them we're gonna make on different layers. Okay, so one layer for the shadows over here, one layer for over here, and one layer for over here, just to make it more organized, right? We don't have to, but we will. So make sure it's on and it's 50%. Now another layer and name it shadows center. Come up here, bring the lasso tool and just draw these shadows, you know. Strong this, just to make it sharp. Make sure you're holding the shift key while drawing. It's a tiny shadow, but it is shadow regardless. No. Twist back, twist back, twist back, twist back, twist back. Right. Same for the other side. Now we're gonna keep this side a bit, you know. So what you want to do here is just separate these two sides as well, because this side is not that dark shadows, you know what I mean. The left side, my left side has darker shadows than my right side. Okay, so we'll separate them into 2 layers. So this right here, just
Hit B, colored, whatever color you have in your palette. Lock it with the gradient tool and just come here and just go from here to here. Wax and dark shadows. Start maybe here and here. Start here and end here. Yeah, that's nice. Those are nice shadows. Just hit D, clip that, the opacity down to 45% and you're done. You don't have to bother about it. You don't have to check because it's gonna look awesome. Make sure to name it left. Name this one shadows center right. Come down here, over here, it's a nice shadow right there. Make sure you hit shift while you're drawing with the lasso tool. And just innovate a bit, okay? You don't need to be pixel perfect with the original image. Just innovate the shadows, especially the shadows. If you don't innovate anything else, I don't really care, but just have nice shadows, okay? The shadows are 90% of your image. They make it look better. What I mean, you get it. You get what I mean, okay? I don't need to elaborate on that. Okay, that's it. Brush that. Control D, that's it, G, there. Lighter shadows. Maybe 55 for this one. Looks nice, see? You can add the buttons if you want over here, but I'm just gonna skip that. Actually, you know what? I might even add it. We'll see. Let's drop the opacity a bit, maybe. Halal was wrong. You need to drop the opacity up. Just play with the opacity, okay? Just don't rely on my model. Just play with the opacity. It's your vector, not mine. Okay, so that's done. Back layer. Left armpit, bring that down to about 50%. Go about here, make sure the left armpit selected. You have lasso tool selected. Now it's just free drawing, okay? It's just draw the shadows to your heart's content. Where we see some of these. Some of these. Make sure you press shift while you draw the shadows. Some of these, some of these, some of these, some of these, some a bit more precise, like these, a big. Just play around, okay? Just take the whole thing, dude. Okay. These are some dark ones. Some out here.
take that. Let's play around, see what fits. Okay. We're also gonna add the highlights, okay? It's not just the shadows, it's also the highlights. A long shadow right here. It's gonna be a bit lighter one right here. Oh, that's nice. Some over here. Some over here. Just be creative. Show some creativity. Some here. Here. What else? Some here. Some here. Some here. Yeah, I think that's all the shadows I see. Here, pretty much all the shadows I see over here. Alright, that's nice. Okay, just now over here you can't really, do a gradient. You can, and we will try it right now, but it's just that you'll have to manage with the darker ones, like these right here. They need to be dark. Those are dark shadows right there. And then just here, that lighter ones like these, and that one, maybe. Then there are some really light ones, so just 40, right? Come over here, all of these, just a 3-layer, 3 different types of shadows, 3 different colors of shadows. Look real nice. Okay, 3 is the number that you should aim for. You could go more, you could go less, up to you. Just don't make it monotonous, okay? It's art at the end of the day. Let's clip that. 30% maybe. Let's see. 50. Yeah, 30% looks nice. 15 maybe. Just drop it down to about 15%, and now I'm gonna give you a pro tip. Okay, so to make the shadows blend in a more, you can see right here these are some sharp edges. If you don't want sharp edges, what you can do is come up here on the left armpit. That's the latest shadows layer of the shirt. Just select that. Sorry, come up here into filters and convert for smart filters. Right now, go to filter, go to blur, and you can use box blur. So don't set it to 100. Start from 5. Right, 5 seems a bit too much. Start from 1 and increase there 2. Yeah, so 2 looks the best to me. Okay, so just a bit of blur on the edges is gonna make it more seamless. Okay, it blends in more with the shirt, with the other parts of the vector. Now with that out of the way,
we're just gonna add another layer, name it right armpit. Make sure that it's selected. Come up here, drop the opacity down to 6%. Here, right armpit. Just replicate whatever you did in the left armpit. So I see some shadows here, here. Forgot to press shift. Yes, I'll forget. Just come up here, over there, maybe. Some here, some here, some here, some here. In a way, okay, just whatever you see fit. Here, small ones here, small ones here, small ones here, small ones here. Just small shadows. Right here. Don't really see any more shadows here, maybe, but I guess we took these in the yeah, we did, so we don't need to do them again. Yeah. That's it, I guess. Now take the brush, select 15. Keep the brightness to 15 to start with, and come up here to the dark areas. Just paint. Make sure to leave the bright areas intact. Only paint on the dark area. Okay. So these I consider lighter than this naturally. So that's the only dark shadow that I think there is on the right side. And so I'm just gonna come here, bump it up to 25%, was it? Yeah. Just come here, take them, these, just make sure you're not going over the top one. Okay. Okay. Now go for the lightest one, and that's 40. Here, make the brush big because we want to paint everything here. Everything here is lighted. Yeah. And we're done with that. Okay, just hit Ctrl D, clip that, and drop the opacity to about 20, maybe 35. What was it? I don't remember. Bring the opacity to 100, and voila! There you have it. What was the opacity on that one? 55. Not bad. 100%.
Okay, that's the, yeah, this is not 25, about 25, and come up here, filter, convert for smart filters, the blur, get the box blur with 2 pixels. There you have it. That right there. Oh, Sit Vlog, shout out to you. Big help to my family. And that right there concludes the vector art. Let's see the full thing. Okay. There you go. That right there is your vector art. Now, what you can do is select the bottommost layer and hold shift and select the topmost layer. Now hit Ctrl G to make it a group. Name it vector. OCD kicked in. Now Ctrl J to duplicate that group. Hide the group that's below the top one. Hide the original group and then hit Ctrl E on the copy to merge it. So we essentially have a vector in one layer right here, and we duplicated it because if you want the original drawings, they're right there, just hidden. Now you can just play with however you want. You can just create a new layer and fill it up with solid colors such as this pale red, maybe. Fill that up like that, and I would suggest you to go for a stroke, white stroke, considerably on the outline. Okay, so just now before you increase the size of the scope, just make sure to hit Ctrl C on that. Come up here on a new 3000 by 3000 layer is what I suggest you to use. Come up here and just do whatever you want over here. Okay, and go red. Now you want to do this stroke white. That looks nice. I can maybe 30 looks nice. Make it 30. Right. Nice, cool. You can make multiple layers. You can have some of the colors that I think will look good are this light, very light sky blue. That looks nice. And you can have a teal, a light teal. That will also look nice. Not here because the shirt is kind of teal, kind of mad, I know. And what else looks nice? Pink looks very nice. Looks real nice. Let me show you. Pink right here. Pale pink. It's real nice. Also my favorite, pale yellow. I don't know if that's yellow or green, but whatever that is, that looks dope. And just play around. Or what you could do is come up here, select the original background, Ctrl C that, Ctrl V, and resize that maybe. I don't know. Just do that. Maybe, yeah. Just do that, and you can have a blur on that. You can have a lens blur. That'll look nice. About that, that'll look real nice. Yeah, hit OK. See, it's amazing. Just make sure to save. Okay, save the original vectors. हाँ चलो चलो वेरिएंट हो गया.
एक्सपोर्ट करके इसको दे देता हूँ। चलो आज की स्ट्रीम इधर ही बंद करते हैं अपने। होप यू गाइस एंजॉयड। इफ यू डिड लाइक तो तुमने कर ही दिया होगा भाई। 53 प्लेबैक्स, इसकी माफी का थैंक यू भाई, जो आया थैंक यू। तुमको मिलता कल